if you have 2 weeks for IIT exam and you still don't have a plan, this is the only video that you'll need for your entire preparation strategy. And watch it once, save it and execute करो. So मेरा नाम सायक है, I'm from IIT खड़गपुर. मैंने IIT दिया था and I'm AI 26 in my category. Anyways, I did give IIT and I also got into IIT Bangalore. So real quick is that let's understand कि तुम क्या solve कर रहे हो and what are the things that you're facing. Very short and crisp. ठीक है. 60 questions है, 4 subjects. ठीक है. From 50 questions for in total 4 subjects, so 15 questions per subject. Physics के maths bio PCMB +4 -1. ये सबको पता है, 3 घंटे करने हैं. ठीक है. The target score to get into a good either Pune या कोई और पकड़ लो. I think to be honest very straightforward बताता हूँ कि अगर तुम्हें आइजर चाहिए, इवन आइजर बैरामपुर, आई वुड स्ट्रांगली से कि एज पर द कंपटीशन इज गोइंग ऑन, IIT के बारे में जितना लोग जान रहे हैं ना, उतना तुम्हारा कट ऑफ हाई जाएगा. एंड एट दिस पॉइंट आई वुड से लाइक above 180 plus would be a very safe score, so that तुम्हारा आइजर कहीं पे भी हो जाए. एंड इफ यू वांट टू गेट IIT Bangalore, then definitely 200 plus is bare minimum. ठीक है. दिस इज व्हाट नोबडी टेल्स यू अबाउट IIT. ठीक है. बायोलॉजी इज दैट ईजीएस्ट सब्जेक्ट इन द पेपर. ठीक है. मैं PCM स्टूडेंट हूँ, मुझे बायोलॉजी नहीं आती थी. व्हाट आई डिड इसके मैंने NCERT पढ़ा. सो आई वुड रादर से कि लाइक मेरी दोस्त ने मुझे पढ़ा दिया था सब कुछ. सो yeah, that is the main reason why I got even like IIT Bangalore in the first place. But yeah, that is there. So if you are a PCM student, NCERT लो, PDF लो, ठीक है, नोट्स रटो. ठीक है, सिंपल नोट्स रटो, बिकॉज उससे डायरेक्ट सवाल आते हैं बायोलॉजी के. एंड इट्स नॉट लाइक वेरी हार्ड, बट रादर इफ यू डू हैव द कंसेप्ट कि इस पे क्या है, सो यू कैन मेक एडुकेटेड कैस राइट देयर. ठीक है. सो उससे तुम बहुत अच्छा कर सकते हो. मेरे बायोलॉजी में 15 क्वेश्चन में से 12 करेक्ट थे. ठीक है, इन माई लास्ट ईयर. सो yeah, that's pretty much about it. Maths was very strong. I think I got all of them correct, 15 out of 15. So yeah, and that is pretty much about. A very big misconception for students in maths is that ki IIT में like maths is easy that JEE means. So if you are thinking कि भाई मेरा JEE means लेवल का नहीं है, so मैं IIT कैसे निकालूंगा, भाई उतना टेंशन मत ले, because class 11 12 के maths आते हैं in IIT. So that is how it is यार. That is how it is. So अगर तुम अच्छे से थोड़ा भी पढ़ रहे हो, then you have a very strong chance of getting into any big IISER, right? So that's it. There is. अब there are 2 weeks guys अभी के लिए. So पहले वीक में क्या करना है भैया? So वीक भर में we are trying to wrap up all the important chapters that we have in the hand. IIT का जो sample size that is small, but I did create a small like I would say chapter wise weighted. You will get that in the description, so you can definitely check that out. कि this chapter is very much important as per the past year analysis. So definitely make your strategy like this. If you have not prepared any of the high weighted chapters अभी तक, उसको ready करो. Make sure you have a syllabus complete, because syllabus is not भी उतना सारा. ठीक है. Physics में like mechanics, rotational, conservation of moment, energy से बहुत सारे सवाल आते हैं. ठीक है. These 4 areas are going to like they are basically asked every single year. So make sure तुम्हारा वो है. Organic in chemistry, mechanisms, chemical equilibrium, यहाँ से आते हैं सवाल. सो मेक श्योर ये सब अच्छे से रेडी है तुम्हारा. मैथ्स में कैलकुलस, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, मैट्रिसेस एंड प्रोबेबिलिटी आर द हाईएस्ट वेटेड चैप्टर्स गाइस. लाइक ओवरऑल जनरली का मैथ तुम्हारे रहे हो तो आई वुड हैव डबल डाउन ऑन दिस. ठीक है. बायोलॉजी में NCERT पढ़ो, देख के पढ़ो, हो जाएगा. लिस्ट है डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लेना. नाउ वीक 2 में क्या करना है? वीक 2 में इट्स ऑल अबाउट प्रेपिंग अप. एरर लॉग्स रिवाइज करो, PYQs दो. ठीक है. PYQs देख के लाइक घबराना नहीं है. यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर कवरिंग अप ऑल योर वीक एरियाज. दैट इज व्हाट मैटर्स इन द एग्जाम राइट नाउ, बिकॉज एक एग्जाम से रैंक बदल जाएगी पूरी. अभी तो नीट भी कैंसिल हो गया. सो IIT इज लाइक बैकअप था, मेन ऑप्शन आ गए बहुत लोगों के लिए. सो मेक श्योर यू गिविंग दैट अप करेक्टली. सो और कट ऑफ आ जाएगा इस साल, बिकॉज मेनली बिकॉज ऑफ नीट. सो एनीवेज, कमिंग टू द पॉइंट इज क्लास के 3 दिन रिवाइज करो अच्छे से, ध्यान से लेकर रहना एंड अच्छे से सो, बिकॉज दैट इज अ वेरी बिग थिंग दैट लॉट ऑफ पीपल डोंट डू, राइट. एंड वन लास्ट थिंग बिफोर यू गो इन द एग्जाम, डो नॉट अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस फॉर 50-50. अगर श्योरिटी हो तभी अटेम्प्ट करो, बिकॉज 4 गलत सवाल और तुम्हारा एक करेक्ट आंसर गया बाहर में पूरा. सो देख के अटेम्प्ट करना है. स्टार्ट विद द मोस्ट ईजिएस्ट सब्जेक्ट दैट यू हैव. ठीक है. स्कैन द फुल पेपर इन द फर्स्ट 10 minutes एंड शुरू करो सबसे ईजिएस्ट
सेक्शन से, इफ यू डोंट हैव अ सब्जेक्ट ऑर्डर इन माइंड, ठीक है. बी फ्लेक्सिबल इन द एग्जाम, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट गाइस, ठीक है. अगर लग रहा है केमिस्ट्री इजी तो केमिस्ट्री शुरू करो, बिकॉज यू विल बिल्ड अप मोमेंटम इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन IIT, दैट इज वेरी मच नीडेड. एंड अभी के लिए इतना ही था. इफ यू हैव एनी मोर डाउट्स लेट मी नो इन द कमेंट्स. एंड अभी के लिए इतना ही. मेरे पर्सन को मेरी ज्वाइन कर लेना, एंड दैट्स ऑल.